The Indian Armed Forces have always been front and center in safeguarding the nation's security. Members of the armed forces have devoted their entire lives to the service of the people in more ways than one. Today, on Kushalta ke Kadam, we look at how India's forces are building empowered communities across the country. So in the Army, we have an association called the Awwa, that stands for Army Wives Welfare Association. It's a registered NGO. So we continuously work for the welfare of the children, spouses and dependents of all the Army personals. This Awwa continuously works for the upliftment and empowerment of the families. We want the families to feel confident and to be self-reliant. As part of the Awwa, we have something called as vocational training courses, and it runs these VTCs across the country in all the military stations. One such vocational training course is the result of a partnership between the Indian Army and Usha International Limited that is empowering women who live in and around the Army unit in Bias in Punjab. Renowned for its skill development program in sewing and tailoring, Usha's Training cum Production Center is enabling the wives of Army personnel at the village level to become financially independent. हमारी जो क्लासेस है वो मई से स्टार्ट हुई हैं, जिसमें हमने बेसिक कोर्स इनको करवाया, जिसमें लेडीज़, जेंट्स और बच्चों के कपड़े वगैरह सिलाने के लिए बनवाए थे। तो बेसिक से स्टार्ट किया हमने, इनको सुई में धागा डाला, मशीन को कैसे चलाना, मशीन 2 दिन की हमारी जो ट्रेनिंग थी वो मैकेनिकल ट्रेनिंग थी, मशीन को कैसे जोड़ना है, क्योंकि ये मशीन बिल्कुल ऐसे ही रॉ में आई थी। इनको स्टैंड कैसे लगाना है, मशीन कैसे जोड़ना है, उसको ठीक कैसे करना है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो पूरा 2 दिन का हमारा टेक्निकल उस पर काम था। The center provides 25 days training to 15 women in sewing and stitching. After completing the training, the newly trained women will be able to train others who will join the next batch. Usha's 25-day training is divided into 2 phases, 15 days of initial training and after a period of 6 months, 10 days of advanced training. The curriculum covers various aspects of sewing such as stitching, embroidery and garment design, enabling women to create marketable products. यहाँ पे आर्मी में आने के बाद में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज करवाए जाते हैं, तो उसके अंदर हमारे यहाँ ब्रिगेड में सिलाई करवाया गया। तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना नाम दे देती हूँ, इसमें सिलाई सीख लेती हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं आती सिलाई, तो मैं इसमें मैंने नाम दे दिया और सिलाई सीखने लग गई। हम लोग तो स्टार्टिंग से पेटीकोट सिला है, बच्चों का बूमर सीखा है, फिर स्कूल लड़की के लिए स्कर्ट, शर्ट, प्लाजो। पहले सिलाई नहीं आती थी मेरे को, पढ़ाई किया था, MA तक पढ़ाई किया था, लेकिन बाद में ये जो आर्मी के ये कोर्स वगैरह है, इनका फ़ायदा उठाना चाहिए लेडीज़ को, अगर वो आर्मी के अंदर है तो। इसीलिए यहाँ पे हमारे अभी सिलाई का कोर्स था, तो इसके अंदर हमने रुचि दिखाई सीखने के लिए, ताकि हम अपना और अपने बच्चों का देख सके, सिलाई वगैरह का कुछ कर सकें। The primary objectives of the Indian Army's association with the Usha Silai Schools are to empower Army wives with skills, provide alternate sources of income, particularly in remote or conflict-prone areas, and enable beneficiaries to explore entrepreneurship and contribute to their family's financial well-being. एक कोने में लेके जाना, एक दूसरे को पकड़ के बताना नहीं है किसी को, हाथ पकड़ के। Usha Silai Schools also establish community centers in army residential areas, creating hubs for skill development, knowledge sharing and community bonding. तो इस एक्टिविटी से आप लोगों को क्या समझ में आया, क्यों कराई ये एक्टिविटी? समझ में आया कि जब सब साथ मिल के रहेंगे तो हम अच्छे से कोई काम का सलूशन अच्छे से करते हैं। इस ट्रेनिंग से जुड़ने का हमारा तो ये मतलब है कि हम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट और कॉन्फिडेंस बना सकें, और मैं समझती हूँ कि इस ट्रेनिंग को करके ना हम हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, बल्कि बाकी वुमेन एम्पावरमेंट को भी कुछ अच्छा सा संदेश दें। एम यही है, देखिए ये बिल्कुल भी बात मतलब खुल के बात ही नहीं कर पा रही थी, एक दूसरे को जान नहीं रहे हैं तो बात भी नहीं कर पा रहे थे। तो जब एक्टिविटी करते हैं तो आपस में इनका रिलेशन भी बनता है, और एक दूसरे का साथ कैसे दे रहे हैं एक्टिविटी में, मतलब अपना कोई एम है तो उसको हासिल कैसे करना है।
तो कुछ इस तरह की एक्टिविटी थी लाइफ स्किल की, जो इनको मतलब मार्केट में कपड़ा लेके जाना है, सिल के लेके जाना है, तो उसको अपनी चीज़ को कैसे प्रमोट करना है, वो सारी एक्टिविटी बेस थी इसमें। उसमें वो हमें कैसे मतलब टेलर के कोई आएगा हमारे पास कपड़े लेके, उसके साथ हमें कैसे बातचीत करनी है, कैसे सिलाई करना, उसका कपड़ा गलत हो जाए कैसे ठीक करना, कैसे उसके हैंडल करना उसको, कैसे वही पेशेंस के साथ सारा काम करना। With continued commitment and expansion, this partnership has the potential to transform the lives of countless army wives, making them self-reliant and resilient contributors to both their families and the nation. इस प्रोग्राम से बहुत कुछ लाभ हुआ है, तो हमें बाहर जाके स्टिचिंग वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ा, तो हमारे लेडीज़ ने बहुत अच्छा से सीख गए, अभी वो भी खुद कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हमको एक ऐसे रेपुटेड संस्था के साथ, जो भारत सरकार के एक अभिन्न अंग के रूप में काम कर रही है, इंडियन आर्मी के साथ काम करने का मौका मिला। पहले हम लोग जो CRPF हैं उनके साथ पहले हमारा अनुभव रहा है, इंडो जो तिब्बतन सीमा फोर्स है उनके साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे, जैसे अगर हम CRPF कहें तो आज वो लोग अपने जो यूनिफॉर्म है वो महिलाएं यूनिफॉर्म सिल रही हैं, और यूनिफॉर्म को जो यूनिफॉर्म बाहर सिलने के लिए वो लोग देते हैं, वो यूनिफॉर्म वो लोग अपने सेंटर पे सिल करके लोगों को दे रही हैं। For close to 60 years, the Army Wives Welfare Association has worked for the welfare and empowerment of the families and dependents of those in the army. And that's exactly what the collaboration between the Indian Army and Usha Silai Schools is achieving. The vocational training, sewing machines and entrepreneurial support aren't just creating financial independence and empowered women, they are also strengthening a sense of self and community within the families of the Indian Army. From one of the largest armies in the world to the largest paramilitary force in the world, the CRPF or Central Reserve Police Force is responsible for a variety of internal security and law enforcement duties in India. It serves in counter-insurgency operations and in sensitive conflict zones. While the men and women are away on the call of duty, the CRPF Family Welfare Association or the CWA plays a vital role in providing a support structure to the families of these brave personnel. Among the aims and objectives of the CWA or CRPF Family Welfare Association is to skill the CRPF wives and give them a sense of accomplishment. It is this common objective that has brought the CRPF and Usha together for a valuable partnership. Through the Usha Silai School program, Usha has forged many strategic partnerships with the various verticals of Indian Armed Forces. The collaboration focuses on sewing training for the wives of army personnel as well as the women residing in the border areas, empowering them with the essentials of sewing and stitching, and thereby offering them an alternate means of livelihood to earn for their own families. The skill development program is now a rewarding partnership at 12 locations, one of them being the CRPF's base in Bhubaneswar, Odisha. 40 to 50 women were thoroughly assessed, after which 15 women were selected to enhance their sewing skills. Usha has provided one of its best trainers to further train these 15 women. 40-50 लेडीज़ आए थे, उनमें से चुन के हमने 15 जन को चुना है, और जिनको थोड़ा बहुत सिलाई आता है और उनको हम आगे एडवांस ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो उसी हिसाब से कोर्स मटेरियल भी हम लोग ने जो चूज़ किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है इनका सिलेबस। जिनको थोड़ा बहुत सिलाई आता है ये एडवांस मशीन में होगा, RSM मशीन में एंड UJ मशीन में होगा, तो इसलिए ज़्यादा फोकस हमारा यूनिफॉर्म्स में रहेगा। और जैसे लेडीज़ गारमेंट हो गया, डिज़ाइनर ब्लाउजेस वगैरह और फ्रॉक, सलवार सूट, तो वही सब में ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी जो बेसिक आइटम्स होते हैं वो सारे सिखाए जाएंगे, होम फर्निशिंग आइटम्स भी सिखाए जाएंगे,
कुशन कवर्स हो गया, बैग्स वगैरह वो सब सिखाए जाएंगे। The CRPF Family Welfare Association, in partnership with Usha, provided a sewing machine to each woman here. This was an advanced level production training of the selected Silai heroes, and for 15 days they followed a set syllabus with targets and goals to be achieved and a level of proficiency to be attained. Since the inception of this training program, every year 15 women have been trained in this manner. So far, in 3 phases, Usha and CWA have trained 546 women in 19 group centers. And in the current phase of training, 14 new centers are being opened to train 252 women across India. CRPF के साथ हमारा जो शुरू से जो जर्निंग रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, और यहाँ पे जो लेडीज़ लोग सीखने के लिए आ रहे हैं उनका जो इंटरेस्ट है देख के बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि और भी अच्छे से हम इन्हें सिखा पाएंगे, और ये अच्छे से मतलब नया नया चीज़ सीखने के लिए इन लोग का मन में भी बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता है, तो हम अच्छा लग रहा है। एक तो टारगेट फिक्स किया हुआ है मैंने, जैसे हम लोग लेडीज़ गारमेंट में इन लोग को परफेक्शन लाना है, एंड यूनिफॉर्म स्टिचिंग में इन लोगों को परफेक्शन लाना है। तो ज़्यादातर जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं या स्कूल बच्चों का यूनिफॉर्म तक सिखाते हैं, पर ये जो एक बेस है CRPF का बेस है, तो इनको यहाँ पे इन लोगों का जो वर्दी का सिलाई का भी हम लोग सिखाएंगे। तो ये हमने टारगेट फिक्स किया हुआ है कि वर्दी सिलाई तक हम लोग इनको अच्छे से सिखाएंगे। The women of CRPF are learning a new thing each day. For some, the training has been a utilization of spare time, while for others, it has presented an opportunity to make a name for themselves. बहुत टाइम मिलता है मैडम, आदमी लोग को नहीं रहने से खाली बैठना पड़ता है और बहुत बोर लगता है खाली बैठने के लिए, इसलिए हम सिलाई करने के लिए सोचा। बच्चे बड़े हो गए और खाली समय में क्या करेंगे, इसलिए हम लोग को सिलाई करने के लिए सोचा। मोबाइल देख के इधर उधर गप्पा मार के टाइम पास करने के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए सिलाई करने से अच्छा है, और हम हमारे लिए कम से कम कर पाएंगे। और मेरे को सिलाई करना बहुत पसंद है। 10 बजे के बाद जब खाली हो जाते हैं तो फ्री टाइम में कुछ करने के लिए मन कर रहा है, खाली समय में सिलाई विलाई करने के लिए ऐसे सोचे हैं। हाँ, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। This is not the only center. The CRPF or Central Reserve Police Force, in partnership with Usha, established training and production centers in 19 different CRPF bases for the wives and widows of CRPF personnel. So far, 543 women have been trained and certified from various centers in Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Odisha, Assam, Jammu and Kashmir, Tamil Nadu, to name a few. With the partnership between the CRPF and Usha growing in strength and numbers, there will be more stories of hope and empowerment that will continue to unfold here. After the break, the women of the Usha Silai School are giving a new life to the uniforms of retired defence personnel while also contributing to the environment. India is a country of incredible diversity. Women often take on significant roles in their families and communities. But for many of them, a lack of opportunity and resources limits their ability to make a real impact. And that is how it has been in the village of Uncha Amirpur in the Dadri district of Uttar Pradesh. That's where the Usha Silai School program comes in. For 13 years now, the Usha Silai School program has empowered women to learn new skills and created sustainable livelihoods. Of the many partners involved with Usha in this endeavour, the Sewaj Naseem Foundation is one of them. Its founder, Major General Ashim Kohli, a retired army officer, was keen to find a dignified and graceful method of utilising old armed forces uniforms while also upcycling this used clothing into new marketable goods. Immediately after my retirement, COVID happened. So during COVID, a lot of people were playing with a lot of new ideas. I stuck onto this idea
let me find out a good way for graceful disposal of the uniform. I did some research work and realized that this problem need to be answered. It was definitely there in our country, and realized in many other countries they also want to know how to do the graceful disposal. So that's how I thought of registering a NGO with the name Sewaj Nisim Foundation, and we gave the theme to our NGO Vardi Ka Samman. The Usha main focus on women empowerment and also reaching the rural area to give the generating the employment is a very good thing that will benefit our cause also. And actually with this we are getting an emotional connect also to our own theme of Vardi Ka Samman. Everybody is trying to give to the women empowerment and self-generation of employment. So that's how I'm looking very positively to this program. This process of upcycling presents an opportunity to the women to use their creativity in turning old uniforms into items of value and create economic opportunities for themselves at the Usha Training Cum Production Center in Uncha, Amirpur. From everyday home accessories to bags and wallets, this initiative is helping women to make the most of the resources around them, gathering, cutting, stitching and using their expertise. Guiding them through the process are Usha experts who support with designing and the training. Once the uniforms are received, the team then carefully checks for any medals, insignia and name tags and removes them with due respect. Then the process of upcycling these uniforms begins. टाटा पावर और ऊषा के द्वारा जो चलाया जा रहा है प्रोडक्शन सेंटर, उसमें क्या होता है कि जो वर्दी का सम्मान जो इनिशिएटिव है उसके द्वारा हमारे पास वर्दियाँ आती है आर्म्ड फोर्सेस की, उनको सबसे पहले हम उनका ड्राई क्लीनिंग या जो भी हमारा क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है हम उसको पहले क्लीनिंग करवाते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेंटर पे लाके उसको फिर आयनिंग और कटिंग और ये सब मेथड द्वारा और थोड़े बहुत कुछ हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जो सेवाज निसिम फाउंडेशन है उनको हम अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, फिर वो उन प्रोडक्ट्स को आगे सेल करते हैं या किसी इनिशिएटिव में यूज़ करते हैं। ये महिलाएं उन्हें बनाती हैं और ताकि इससे थोड़ा बहुत जो महिलाएं हैं जो विलेजेस में रहते हैं उनको थोड़ा अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और काफ़ी ये अच्छा इनिशिएटिव्स है। और उषा जो है उषा यहाँ पे ट्रेनिंग सपोर्ट देता है इन महिलाओं को और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और दूसरी चीज़ ये है क्योंकि बहुत सारा वेस्ट होता है, जो आर्म्ड फोर्सेस की यूनिफॉर्म्स है बहुत सारा वेस्टेज होता है और एक सम्मान की बात होती है कि यूनिफॉर्म को पहनने के बाद उसे फेंका ना जाए, उसे इस्तेमाल करें। तो उषा उसमें काफ़ी तत्पर है कि हाँ हम इसमें आगे काम करना चाहते हैं और इसको अपसाइकलिंग करके कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स में तब्दील करके कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे हम बेचना चाहते हैं। Kumkum Raghav is one of the trainees at the production center. Delighted to be part of such an initiative, she wishes to involve more women in this journey of upcycling. She works hard to give these old uniforms a new life in the form of school bags, wallets, sling bags, soft toys, mobile pouches, keychains, cushion covers and more. हमें सिलाई करते हुए उषा कंपनी में 7-8 महीने हो चुके हैं और हम यहाँ पे आते हैं 10 बजे आ जाते हैं, शाम को 4 बजे चले जाते हैं और ऑर्डर पे भी काम करते हैं हम यहाँ पे। घर के भी कपड़े सिल लेते हैं, बाहर से भी लेडीज़ आती हैं उनको सिलाई भी सिखाते हैं, तो कुछ पैसे कमा लेते हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ कर लेते हैं घर से निकले पीछे। तो उषा कंपनी के लिए बस मैं धन्यवाद ही दूंगी कि मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया। बस मैं ये चाहूँगी जैसा मैंने किया है सब लेडीज़, अगर मुझे कोई देख रहा हो तो सब कुछ वो ऐसा ही करे। The NGO Parivar Society handholds 85 Usha Silai Schools in various districts of Uttar Pradesh where trainers teach tailoring skills to women from low-income families. It creates in them a spirit of entrepreneurship and brings them much needed income to help them run their homes. वर्दी का सम्मान की जो संस्था है उसके साथ जो काम हम कर रहे हैं कि जो हमारी भारतीय सेना की वर्दियां हैं उसका सम्मान रहे और उनसे हम तरह तरह के उत्पाद बनाएं, जैसे लैपटॉप बैग है, टोट बैग है, साइड का बैग है, जो वो यूटिलाइज हो सकें। वर्दी ऐसी ना रहे तो वो आदमी के एक गरिमा का विषय है और उसको यूज करेंगे तो हर आदमी के दिल में वो सम्मान रहेगा और महिलाओं को रोज़गार भी मिलेगा, उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी।
The partnership between Usha and the Sewaj Naseem Foundation is creating empowered communities in rural India and also giving these uniforms a new identity, a new purpose and new pride as they now come to symbolize service of a different kind.